Hello students, myself Shinalisha welcomes you on behalf of Saraswati International Academy. Students, today we will begin with the next part of the chapter Molecular Basis of Inheritance. Students, in the last video we have studied in detail regarding the structure of a polynucleotide chain as well as we have studied in detail the structure of the DNA. Today students, we will be studying regarding the packing of a DNA helix. So basically we will come to know that the length of the DNA basically is too much. But how that long DNA gets accommodated within the nucleus. So for that the DNA will be coiled. So how that coiling of the DNA occurs, we will be studying regarding that. So that is packaging of the DNA helix. The length of the DNA in human cell can be calculated as, now suppose what is the length of the human DNA, how can we calculate it? So it can be calculated distance between the two consecutive base pairs, that is 0.34 nanometer, which is equal to 0.34 into 10 raised to 9 meters. Now students, the total number of base pairs in the DNA helix of a typical mammalian cell is 6.6 into 10 raised to 9. So, what is the number of the base pairs in a normal mammalian cell? So, it is 6.6 into 10 raised to 9. So, now how can we calculate the length of this DNA? So, the length of DNA is equal to, it is basically the distance between the two consecutive base pair, which is 0.34 into 10 raised to minus 9 multiplied by total number of base pairs. So, what is the total number of base pair? 6.6 into 10 raised to 9, and this gives approximately the length as 2.2 meters. Are you getting my point, students? How can the length of the DNA be calculated? Length can be calculated as distance between the consecutive base pair, which is, we know, 0.34 into 10 raised to minus 9 meter multiplied by total number of the base pair. So, in a normal mammal cell, in a typical mammal cell, the number of the base pairs are 6.6 into 10 raised to 9. So, how can we calculate the length? 6.6 into 10 raised to 9 multiplied by distance between the base pair, that is 0.34 into 10 raised to minus 9, and it gives approximate length as 2.2 meters. So, from this we can see that the length of the DNA is far greater than the dimension of a typical nucleus, which is approximately 10 raised to minus 6 meter. Are you getting my point? The length is 2.2 meter, but the dimension of a normal typical nucleus is how much? It is 10 raised to minus 6 meter in diameter. So, directly can this DNA be accommodated in this particular nucleus? No. So, there must be some spatial arrangement to accommodate such a polymer in a cell of both prokaryotes and eukaryotes. So, there must be some arrangement in the cell so that such a long molecule of the DNA can be accommodated in the cell. So, what is that arrangement? So, first of all, we will deal with the arrangement in the prokaryotes. What are the special arrangement made in the prokaryotic cell to accommodate a long DNA molecule? Now, students, we know that in the prokaryote there is no definite nucleus. We all know that, right? So, in a prokaryote such as E. coli is a bacteria, Escherichia coli. We know that there is no definite nucleus, but it does not mean that DNA is scattered throughout the cell. Are you getting my point? Though they do not have the definite nucleus, it does not mean that DNA is scattered throughout the cell. This DNA, it is organized and into a region which is known as a nucleoid. So, DNA, it is organized to form what? It is organized to form a nucleoid. Now, how that is formed? Now, we know that DNA is a negatively charged particle, so that it is held at places with some proteins that have positive charge to form a coiled loops to reduce the length. So, how the long DNA gets accumulated in the
cells of the prokaryotic. So DNA, it is a negatively charged particle. Now this negatively charged DNA at regular intervals, it is held with the positively charged proteins. So what happens? The negatively charged DNA molecules at some places, it gets attached to the positively charged proteins, and this causes the formation of the loops in the DNA, and these loops will reduce the length of the DNA. So how the DNA gets accommodated in a prokaryotic cell? It is organized to form a nucleoid. How it is formed? So negatively charged DNA at places is held with some positively charged proteins, which results in the formation of the coiled loops, and these loops, they reduce the length of the DNA, and in this way that DNA gets accommodated within the prokaryotic cell. Now students, how the DNA is accommodated in a eukaryotic cell? Now in eukaryotes, this organization is much more complex. यानी कि ये जो पैकिंग वाला प्रोसेस है in the eukaryotic cell, it is a very complex process. This is associated with a set of positively charged basic proteins which are called as the histones. जैसे prokaryotic cell में DNA was basically attached or it got attracted to the positively charged protein, same way here also DNA is associated with the positively charged basic proteins, and these basic proteins are called as the histone protein. Now, a protein normally acquires a charge depending upon the abundance of the amino acid residues with the side chain. So, which charge is acquired by a protein? It depends upon the amino acid residues which are present in their side chains. Now these histones, they are low molecular weight proteins rich in basic amino acids lysine and arginine. So histones, they are low molecular weight protein and they contain in abundance the basic amino acids lysine and arginine. Now both these amino acids carry positive charges in their side chain. So what charge is carried by this protein? Basically it carries the positive charge. So what happens here? The DNA and histones, they are loosely bound together to form a deoxyribonucleoprotein which is called as the chromatin. What happens? The DNA gets associated with the histones and it forms the deoxyribonucleoprotein. See, DNA is deoxyribonucleic acid and histones are the protein. ये दोनों का कॉम्बिनेशन होकर क्या बना? Deoxyribonucleoprotein, which is also called as a chromatin. What is it also called as? It is also called as a chromatin. Now students, the positively charged R groups of these amino acids bind strongly to the negatively charged phosphate groups of the DNA. So the binding is between the negative charge of the DNA which is possessed by its phosphate group and the positively charged R groups of the proteins or amino acids. Now this linkage maintains the helical form of the DNA molecule without disturbing its structure. Now how are histone proteins associated? So these histones are organized to form a unit of 8 molecule called as the histone octamer. Now these histone proteins, they are organized to form a unit, a single unit of total 8 molecules, and this structure formed by the association of the 8 histone molecules is called as the histone octamer. Now what histone octamer consists of? It consists of 2 molecules, each of 4 different histones. So total histone octamer. So how many histones will be there? 8 histones will be there.
Now total 4 different types of histones, and each histone are of 2 molecules, which results in the formation of histone octamer. So which are the 4 different types of histone? So one is H2A, another one is H2B, another one is H3, and lastly it is H4. So these 4 different histone molecules, they are in 2 type. बेसिकली ये जो 4 हिस्टोन्स है इनके कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? हर एक हिस्टोन के 2 मॉलिक्यूल्स. All these are associated with each other and result into the formation of the histone octamer. Listen very carefully, students. A molecule of 5th histone called H1, it attaches the DNA near the bead which maintains the grip. Now ये bead क्या है वो बाद में मैं आपको बताती हूँ, but again there is another histone molecule which is called as the H1 histone, and this H1 histone it attaches to the DNA near the bead region. ये bead कैसे बनता है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, but this histone will maintain the grip. So this complex structure consisting of negatively charged DNA wrapped around the positively charged histone octamer, which is a core protein, it is called as a nucleosome. So basically central portion में histone octamer रहता है. क्या रहता है? histone octamer. ये histone octamer के surrounding में there is a wrapping of the DNA molecule, and ये जो structure बनता है what is it called as? It is called as a nucleosome. Say for example this is a histone molecule, right? Say for example ये एक histone molecule है, histone octamer है. Now in this histone octamer what happens? There will be the wrapping of the DNA molecule. So ये जो structure बना, this complete structure is called as a nucleosome. Now students, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं पूरे डीएनए के? So a typical nucleosome consists of 200 base pairs, which means 20 helix. एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10. So 200 बेस पेयर यानी कितने हेलिक्स हो गए? 20 हेलिक्स. यानी एक न्यूक्लियोसोम में टोटल 200 बेस पेयर, यानी एक न्यूक्लियोसोम में यानी कि ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर के सराउंडिंग जो डीएनए है उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर या 20 हेलिक्स ऑफ अ डीएनए हेलिक्स. नाउ ऐसे तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बनेंगे. So now students, each nucleosome it is connected to the next nucleosome. Say for example this is one nucleosome, this is another nucleosome. ओके यहाँ पे डीएनए का रैपिंग हुआ, ये यहाँ तक आया. ओके यहाँ पे डीएनए का रैपिंग ख़त्म हुआ, ये दूसरा डीएनए का रैपिंग न्यूक्लियोसोम आया. सो ये दोनों के बीच में का जो डीएनए है व्हाट इज़ दैट कॉल्ड एज? इट इज़ कॉल्ड एज द लिंकर डीएनए. व्हाट इज़ इट कॉल्ड एज? इट इज़ कॉल्ड एज अ लिंकर डीएनए. So a nucleosome is connected to the next nucleosome by a short DNA linker, and this nucleosome along with the linker DNA, what is it called as? It is called as a chromatosome. A nucleosome together with the linker, it is called as a chromatosome. Now students, the nucleosome it consists of the repeating unit of a structure in a nucleus called as a chromatin, thread-like strained bodies seen in the nucleus. So basically there is a chromatin which are thread-like structures which are seen in the nucleus. Now पूरा chromatin बनेगा. ओके वो पूरा जो स्ट्रक्चर बना न्यूक्लियोसोम, देन डीएनए लिंकर, दूसरा न्यूक्लियोसोम, दूसरा डीएनए लिंकर, ऐसा पूरा डीएनए जब हो जाएगा कंप्लीट तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो क्रोमेटिन होते हैं. अभी ये क्रोमेटिन में क्या है? न्यूक्लियोसोम है, लिंकर डीएनए है, न्यूक्लियोसोम है, लिंकर डीएनए है. तो ये जो न्यूक्लियोसोम है क्रोमेटिन में वो कैसे दिखते हैं? दे आर
seen as a beads on the string. Say for example, ये पूरी एक string है, right? ये string में ये सब क्या है? ये जो dots में draw कर रही हूँ, these dots are nothing but they are what? They are the nucleosome. So आपको ये string पे जो nucleosome दिख रहा है, what is they appearing as? It is like a beads on the string appearance. So the nucleosome in the chromatin, they appear as a bead on a string when observed under the electron microscope. So these beads on the string structure in a chromatin, it is packed to form the chromatin fibers that are further coiled and condensed at the metaphase stage of the cell division to form the chromosomes. So students, chromatin fibers बनते हैं. ये chromatin fibers का further coiling होता है, उसका further condensation होता है at the metaphase stage of the cell division, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है? क्रोमोसोम्स दिखता है. सो बेसिकली इन अ नॉर्मल सेल, इन अ नॉर्मल इंटरफेस सेल, chromosomes appear in the form of the chromatin. It is only during the metaphase stage of the cell division where you can see the typical structure of the chromosome. Now, ये जो क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हुआ? क्रोमोसोम में. सो ये जो फर्दर कॉइलिंग होता है न्यूक्लियोसोम तक तो हमने देखा कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर ओनली प्लेइंग द रोल, बट फर्दर कॉइलिंग यानी कन्वर्जन ऑफ द क्रोमेटिन इनटू क्रोमोसोम, दिस इज अ स्टिल further coiling process. So this coiling requires additional set of the proteins which are called as the non-histone chromosomal proteins. यानी क्रोमेटिन जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कॉइलिंग और ज़्यादा होता जाता है. सो ये टाइम पे देर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर प्रोटीन्स एंड दैट प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. नाउ स्टूडेंट्स, जब आप एक नॉर्मल न्यूक्लियस देखोगे, सो some region of the chromatin it is loosely packed and that region it stains light. So जो chromatin का portion light stain करता है that is loosely packed and that is referred to as euchromatin. And the chromatin which is densely packed, or you can say which is tightly packed, it will stain dark and it is called as the heterochromatin. So in a typical nucleus, that region of the chromatin which is loosely packed and which stains light in color, it is called as euchromatin, and that portion of the chromatin which is tightly or densely packed and it stains dark, it is called as an heterochromatin. Now the euchromatin, it is transcriptionally active chromatin. What does it means? उसके पास जो DNA है, that DNA will be coding for the genes. So euchromatin, it is transcriptionally active chromatin. It means the DNA in it will code for what? Genes. Whereas heterochromatin is inactive. यानी उसका जो DNA है, that does not code for the genes. So students, here you can see the coiling of the DNA. See students, ये पूरा पहला जो A वाला स्ट्रक्चर है, what is the A structure? Normal DNA जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. Now B वाला जो पार्ट है, this complete you can see, ये क्या बना? न्यूक्लियोसोम बना. So ये न्यूक्लियोसोम के सराउंडिंग क्या रैपिंग हुआ है? There is a wrapping of the DNA. So here you can see this is a histone octamer. ये पीछे मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये ऑक्टामर के सराउंडिंग किसका रैपिंग हुआ है? DNA का. एंड हियर यू कैन सी दिस आर द लिंकर DNA. जो दो न्यूक्लियोसोम्स को कनेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिंकर DNA. नाउ ये जो स्ट्रक्चर बना न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का फर्दर कॉइलिंग होकर क्या बनता है? दिस आर द क्रोमेटिन फाइबर्स. नाउ क्रोमेटिन फाइबर्स का फर्दर कंडेंसेशन से क्या बनता है? coiled chromatin fiber. What is that called as? It is a coiled chromatin fibers. Coiled chromatin
फाइबर्स का भी फर्दर कॉइलिंग होकर कॉइल्स बनती है. एंड फाइनली एट द मेटाफेज यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम. So see students, here you can see how the coiling occurs, how packaging occurs in DNA. ये नॉर्मल डीएनए है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये पूरा न्यूक्लियोसोम वाला पार्ट है. देन ये क्रोमेटिन फाइबर है, ये कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर है, ये सिर्फ कॉइल है. एंड फाइनली दिस इज द क्रोमोसोम विच appears at the metaphase stage. Okay, so basically this is regarding the packing of the DNA. Now see students, here you can see the structure. How are the 8 histone molecules accommodated? ये देखो, this is H2A, H2B, H3, H4. H3 ये दो दूसरे molecules है. This is H2A. See, these are the 2 H2A. These are the 2 H2B. These are the 2 H3 and these are the 2 H4. ये पूरा क्या बन गया? हिस्टोन ऑक्टामर. ये हिस्टोन ऑक्टामर में क्या रैपिंग हुआ? देखो, डीएनए रैप हो रहा है. ओके, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम. ओके, और ये दोनों के बीच में क्या है? लिंकर डीएनए. सी द स्ट्रक्चर. फिर से दूसरा सेम स्ट्रक्चर. दिस आर H2A, H2B, H3, H4. This is basically DNA is wrapped around the histone, which is a core of 8 histone molecules. And to maintain the grip, there is another histone molecule, that is the H1 histone. See students, you can see the structure. Now see students, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर ऑफ द बीड्स ऑन द स्क्रीन. ये जो आपको सर्कुलर डार्क स्ट्रक्चर्स दिखते हैं वो बीड है. एंड उनके बीच में जो ऐसे लाइन है, व्हाट डज दैट इंडिकेट? लिंकर डीएनए. सी स्टूडेंट्स, ये सिंपल फॉर्म है. ये पिक्चर इज अ सिंपलर फॉर्म. दिस इज अ डीएनए चेन. दिस आर द न्यूक्लियोसोम. सो हियर यू कैन सी कि एक बीड्स ऑन द चेन जैसा अपीयर है. ये देखो, ये एक बीड बनी, ये एक बीड बनी. दिस इज अ बीड, दिस इज अ बीड. एंड देन फाइनली chromatin fibers are formed. So this is regarding the packing of the DNA molecule. Now suppose there is a question कि if the length of the E. coli DNA is 1.36 mm, आपको लेंथ दे चुके हैं, you need to calculate the number of base pairs in E. coli. So can we calculate? Yes. How can we calculate? There is a simple formula. Length of the DNA helix, it is equal to what? Total number of base pairs into the distance between the base pair. So suppose we know the distance between the base pair. What is it? 0.34 into 10 raised to 9 meters, right? So and the length of the DNA is equal to number of base pairs into distance between the base pair. Now here we need to calculate the number of base pairs. So let the number of base pair be x. So therefore what will be the number of the we have length as 1.36 mm. So which means 1.36 mm is equal to x multiplied by 0.34 into 10 raised to minus 9 meter. Therefore x will be equal to 1.36 mm है. मिलीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में. Which comes to 1.36 into 10 raised to minus 3 meter divided by 0.34 into 10 raised to 10 raised to minus 9, which gives the answer as 4 into 10 raised to 6 base pair. So total number of base pair in E. coli will be 4 into 10 raised to 6 base pairs. So that was regarding the packing of the DNA molecule. Now students, the search for the genetic material. What will be acting as a genetic material? ये अब तक क्लियर नहीं हुआ था. वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है? सो even though the discovery of nuclein by Miescher and proposition for the principles of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material took long to be discovered and proven.
सो मिशर ने ये बोल दिया, डिस्कवरी किसकी की? न्यूक्लिन की। कोई एक एसिडिक सब्सटेंस सेल के अंदर है, ऐसा उसने डिस्कवर किया। एंड वही टाइम पे, नियरली एट द सेम टाइम, मेंडल गेव द प्रिंसिपल्स, प्रपोजिशन, यानी उसके जो इनहेरिटेंस के लॉज है वो अप्रूव्ड हुए. So both these events took at the same time. But DNA जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव करने के लिए इट टुक अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. In 1926, the quest to determine the mechanism of genetic inheritance had reached the molecular level. Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt, Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of most of the cells. But the question of what molecule was exactly the genetic material had not been answered. Mendel, Sutton, Morgan, दूसरे साइंटिस्ट की सर्च की वजह से it came to know that chromosomes are located in the nucleus in most of the cell. यानी प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, वो न्यूक्लियस में होते हैं. यूकैरियोट्स में इन अ डिफाइंड रीजन कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. ये नोन हो गया था. बट what is the chemical nature of the genetic material, या genetic material क्या है, that was not yet answered. So different scientists performed different experiments. So one of the experiment is transforming principle, or also called as the Griffith experiment. Now students, ये experiment क्या है? So in 1928, Frederick Griffith, he experimented with Streptococcus pneumoniae. उसने किसके ऊपर काम किया? Streptococcus pneumoniae. He worked on Streptococcus pneumoniae, which is commonly called as a Diplococcus, and it is the bacteria which is responsible for causing pneumonia in mammals, including the human beings. Griffith, he worked on Streptococcus pneumoniae. This bacteria, it causes the pneumonia in mammals, including the human beings, and therefore it is also called as the pneumococcus. It means it is responsible for causing the pneumonia. Now students, ये बैक्टीरिया के दो डिफरेंट स्ट्रेन्स है, दो डिफरेंट टाइप्स है. एक स्ट्रेन ऐसा है जो न्यूमोनिया करता है, एंड एक स्ट्रेन ऐसा है दैट इट इज़ एविरुलेंट. इट इज़ एविरुलेंट यानी एक हार्मफुल है, हार्मलेस है, ये न्यूमोनिया नहीं करेगा. देर आर टू स्ट्रेन्स ऑफ द न्यूमोकोकस. वन इज़ अ विरुलेंट स्ट्रेन जो न्यूमोनिया करता है, and another one is a virulent strain which does not cause the pneumonia. So a smooth virulent strain, that is a strain which is protected by a polysaccharide capsule which forms the smooth glistening colonies when grown on the agar medium and causes the pneumonia. So एक type कौन सा है? Smooth virulent strain, short form is S strain. ये ऐसा टाइप है कि ये बैक्टीरिया इट इज़ सराउंडेड बाय अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल. ये किससे सराउंडेड है? प्रोटेक्टेड है. वो खुद बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड है किससे? पॉलीसेकेराइड से, जिसकी वजह से वो क्या करता है? एक तो अगर अगार मीडियम में उसको ग्रो करेंगे तो वो ग्लिस्टनिंग स्मूथ कॉलोनीज यानी शाइनी कॉलोनीज बनाता है, and that is responsible for causing the pneumonia. Whereas the another type or another strain is a rough avirulent. Avirulent यानी harmless. S strain, R strain, which is without capsule and it forms the rough colonies. So दूसरा टाइप कौन सा है? R strain, कि जो कैसा है? avirulent है. avirulent है यानी वो harmless है, वो न्यूमोनिया नहीं करेगा. अभी ये जो आर स्ट्रेन है उसके सराउंडिंग पॉलीसेकेराइड कैप्सूल नहीं है, एंड एज इट इज़ नॉट हैविंग अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, इट फॉर्म्स विच टाइप ऑफ कॉलोनीज? इट फॉर्म्स द रफ कॉलोनीज. नाउ उसने क्या एक्सपेरिमेंट की? सो ही इन्फेक्टेड अ माइस विद द एस स्ट्रेन
एंड उसको क्या रिजल्ट मिला? that the mice, it died from the pneumonia infection, but the mice which was infected with the R strain, it didn't develop pneumonia, and that mice, it lived. See students, listen carefully. एक माइस को उसने एस वाली बैक्टीरिया से इंजेक्ट किया, एंड व्हाट इट वाज फाउंड? दैट माइस, इट डाइड ऑफ न्यूमोनिया. In the another case, he injected a mice with the R type of the bacteria, and he found that that mice, it survived, it lived. वो mice में pneumonia नहीं हुआ था. Now, Griffith was also able to kill the bacteria by heating them. Okay, he was able to kill bacterial culture लिया, वो bacterial culture को उसने heat किया. By heating he found that the bacteria, they became dead. Okay, अभी उसने क्या किया कि उसने heat killed S bacteria जब mice में inject किया, so he found that the mice were not killed, यानी mice survived थे, they were in a living condition. So see, when he injected a mice with the heat killed S strain of the bacteria, what result he found? He found that the mice lived, यानी कि mice survived. It means कि mice were not suffering from the pneumonia. But students, listen very carefully. When he injected a mixture of heat killed S bacteria and live R bacteria, to his surprise, he found the result that the mice were dead. They were dead. They were suffering from pneumonia, and also from this mice, he was able to isolate the living S bacteria. Now, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो. What result did he obtain? जब आर बैक्टीरिया, लाइव आर बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया, द माइस सर्वाइव्ड. जब हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया, एट दैट टाइम ऑल्सो माइस सर्वाइव्ड. बट जब ग्रिफिथ ने मिक्सचर किया, किसका? लाइव आर बैक्टीरिया एंड हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, ये दोनों का जब मिक्सचर लिया एंड ये मिक्सचर को माइस के अंदर इंजेक्ट किया, टू द सरप्राइज ही गॉट द रिजल्ट दैट माइस, दे डाइड ऑफ द न्यूमोनिया. नाउ वी नो दैट इंडिविजुअली ये दोनों हार्मलेस थे, यानी ये दोनों न्यूमोनिया नहीं करते थे. इंडिविजुअल आर बैक्टीरिया न्यूमोनिया नहीं करते, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया न्यूमोनिया नहीं करते. फिर भी ये दोनों को मिक्सचर को जब माइस में इंजेक्ट किया, इट वाज फाउंड दैट द माइस, दे डाइड ऑफ द न्यूमोनिया. नॉट ओनली दैट, फ्रॉम द डेड माइस ही वाज एबल टू आइसोलेट द लाइव एस बैक्टीरिया. अभी लाइव एस बैक्टीरिया आए कहाँ से? कौन से बैक्टीरिया थे मिक्सचर में? तो लाइव आर थे और दूसरे थे हीट किल्ड एस बैक्टीरिया. But when he was able to isolate what? He was able to isolate the live S bacteria. So ऐसा क्या हुआ? Right? Are you getting my point? See, S strain injected into mice, the mice died. R strain injected into mice, mice lived. S strain which were heat killed, when they were injected into mice, the mice lived. And mixture of the heat killed S bacteria with the R strain live bacteria, when they were injected into mice, the mice died. इंडिविजुअली दोनों में लिविंग थे, बट ये दोनों का मिक्सचर में माइस कैसा हो गया है? दे डाइड. सो स्टूडेंट्स, I told you he was able to recover the living S bacteria from the dead mice. So what did he concluded? He concluded that the living R bacteria, they were somehow transformed by the heat killed S bacteria.
यानी हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में से ऐसा कुछ सब्सटेंस था जिसने लिविंग आर बैक्टीरिया को किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, आर बैक्टीरिया में. What did he concluded? That R strain bacteria had been somehow transformed by the heat killed S strain bacteria. S बैक्टीरिया में से ऐसा कुछ केमिकल, कोई केमिकल था जिसने लाइव आर बैक्टीरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया था, लाइव एस बैक्टीरिया. So there was some transforming principle which was transferred from heat killed S strain which had enabled the R strain to synthesize a polysaccharide coat and have became virulent. उसने क्या कंक्लूड किया कि कोई एक ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है कि जो हीट किल्ड बैक्टीरिया में से, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में से ट्रांसफ़र होके किस में गया, आर बैक्टीरिया में. एंड आर बैक्टीरिया ने ये केमिकल के प्रेजेंस में पॉलीसैकेराइड का कोट के सिंथेसिस किया, ड्यू टू विच दे बिकम विरुलेंट. अगर पॉलीसैकेराइड कोट नहीं है तो वो ए विरुलेंट है. बट एस बैक्टीरिया में से ऐसा कुछ आर बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ है कि जिसकी वजह से आर बैक्टीरिया ने पॉलीसैकेराइड कोट बनाया एंड वो किस में कन्वर्ट हो गए, एस बैक्टीरिया में. एंड एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट होने की वजह से वो विरुलेंट हो गए. नाउ ये ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल की वजह से हो सकता है, बट हावेवर ये जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है ये एक्सपेरिमेंट से क्लियर नहीं हुआ. ये एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि जिसने आर बैक्टीरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, एस बैक्टीरिया में. हीट किल्ड एस बैक्टीरिया में से ऐसा कुछ केमिकल आर बैक्टीरिया में गया है एंड वो आर बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया है, तो वो एस में कन्वर्ट हो गया. सो ऐसा बोला गया कि ये जो चेंज हुआ है, कन्वर्जन ऑफ आर बैक्टीरिया इनटू एस बैक्टीरिया, वॉज ड्यू टू द जेनेटिक मटीरियल. बट ये जेनेटिक मटीरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, इट वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट्स. Okay, so see students, this is an experiment. Material in the dead bacterial cell can transform the living bacterial cell. Okay, dead bacterial cell कौन सा था, एस बैक्टीरिया. एस बैक्टीरिया ने किसको ट्रांसफॉर्म किया, लिविंग बैक्टीरिया. कौन सा बैक्टीरिया था, आर बैक्टीरिया. See students, here you can see live S strain when injected into the mice, the mouse dies. Living R bacteria when injected into the mice, the mouse lives and it does not have the S strain bacteria. Okay, then dead S strain bacteria which was heated. Okay, so यहाँ पे भी the mice it lives but it does not contain the S bacteria क्योंकि बैक्टीरिया कैसे थे, heat killed थे. But when the mixture of the living R strain bacteria and dead H strain bacteria was injected into mice, mouse dies. And not only that, in that there has a living S strain of bacteria. बल्कि अंदर कौन सा लिविंग है, आर है, बट मिला कौन सा, एस. सो कंक्लूजन क्या हुआ, अ केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम वन सेल इज जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मिंग द अनदर सेल. एक सेल का कोई केमिकल सब्सटेंस दूसरे सेल को चेंज कर रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, क्या यहाँ से हमें ये मालूम पड़ा कि बायोकेमिकल जेनेटिक मटेरियल कोई है जिसने एक बैक्टीरिया को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया. अभी ये जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या है, सो फॉर दैट देयर वर 3 अदर साइंटिस्ट जिसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म की एंड दे केम टू नो दैट दैट केमिकल सब्सटेंस विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग one substance or one bacteria into other bacteria was DNA. 3 other scientists they came to the conclusion और उन्होंने ये फाइंड किया कि ऐसा केमिकल जिसने आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट किया था वो केमिकल क्या था. सो बेसिकली दे केम टू कंक्लूजन दैट इट वाज द DNA. सो
बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हमने देखा कि एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है कि जिसने एक स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया को दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट किया, बट व्हाट इज द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर transforming principle. So we will be studying here that. Now prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod and McCarty in basically the genetic material was thought to be protein. Okay. इन्होंने फ्रेडरिक ने बेसिकली ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से ये बोला गया कि कुछ एक जेनेटिक सब्सटेंस है जिसने एक बैक्टीरिया को दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया। तब तक यही माना जाता था कि ये जेनेटिक सब्सटेंस का नेचर, ये जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है, प्रोटीन है। ओके, बट दिस 3 साइंटिस्ट they work to determine the biochemical nature of the transforming principle in the Griffith's experiment. Okay, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से उनको ये मालूम पड़ गया कि किसी ने कुछ तो है, लेकिन उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। सो बेसिकली दिस 3 साइंटिस्ट वर्क टुगेदर। नाउ क्या किया उन्होंने, दे प्योरीफाइड द बायोकेमिकल्स दैट इज प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स to see which one could transform the live R cells to the S cell. Okay, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मिक्सचर लिया, ये मिक्सचर में से सब आइसोलेट किया। यानी एक मिक्सचर ऐसा था कि जिसमें सिर्फ हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के प्रोटीन थे, एक मिक्सचर ऐसा था कि जिसमें हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट्स थे, एक मिक्सचर ऐसा था कि जिसमें हीट किल्ड एस बैक्टीरिया का सिर्फ आरएनए था, एंड एक मिक्सचर ऐसा था कि जिसमें हीट किल्ड एस बैक्टीरिया का डीएनए था। फिर उन्होंने क्या किया, ये सबको माइस में इंजेक्ट किया और उन्होंने ये देखा, क्या देखा कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो आर बैक्टीरिया को किस में कन्वर्ट कर सकता है, एस बैक्टीरिया में। एंड उनकी एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये डिस्कवर किया दैट डीएनए अलोन फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उन्होंने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के बेसिकली एक्सट्रैक्ट को डिफरेंट पोर्शंस में आइसोलेट कर दिया। एक में सिर्फ प्रोटीन्स था, एक में सिर्फ डीएनए था, एक में सिर्फ हीट किल्ड बैक्टीरिया के आरएनए था और एक में सिर्फ हीट किल बैक्टीरिया का कार्बोहाइड्रेट था। ओके, ये पूरा मिक्सचर, ये जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स किस में इंजेक्ट किया, लाइव आर बैक्टीरिया में। कार्बोहाइड्रेट्स किस में इंजेक्ट किए, लाइव आर बैक्टीरिया में। डीएनए किस में इंजेक्ट किए, लाइव आर, बेसिकली लाइव आर में। एंड सेम वे कार्बोहाइड्रेट्स को भी उन्होंने किस में इंजेक्ट किया, लाइव आर बैक्टीरिया। ओके, उनको ये सब करने से क्या कंक्लूजन मिला कि सिर्फ वो मिक्सचर के जहाँ पे आर बैक्टीरिया, लाइव आर बैक्टीरिया में हीट किल्ड एस बैक्टीरिया का डीएनए था, वो ही मिक्सचर ने आर बैक्टीरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया था, तो एस बैक्टीरिया में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? सो हाउ एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड? They separated the extract of smooth virulent bacteria into proteins, DNA and carbohydrate fractions. Each fraction was separately added to a culture medium containing the live rough bacteria. क्या किया, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के मिक्सचर को उसने किस में सेपरेट कर दिया था, प्रोटीन्स, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, आरएनए। ओके, बाद में सेपरेटली 4 ट्यूब ली, वो 4 ट्यूब में लाइव आर बैक्टीरिया थे, एक ट्यूब में उन्होंने एस बैक्टीरिया का कार्बोहाइड्रेट डाला, एक ट्यूब में उन्होंने एस बैक्टीरिया का प्रोटीन डाला, एक ट्यूब में उन्होंने एस बैक्टीरिया का डीएनए डाला और एक बैक्टीरिया में आरएनए डाला। ओनली द कल्चर दैट रिसीव द डीएनए फ्रैक्शन ऑफ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विरुलेंट बैक्टीरिया प्रोड्यूस द स्मूथ बैक्टीरिया। सो क्या कंक्लूजन मिला कि लाइव आरएनए वाला जो कल्चर मीडियम था कि जिसमें डीएनए था एस बैक्टीरिया का, वो ही मिक्सचर ने आर बैक्टीरिया को किस में कन्वर्ट कर दिया था, एस बैक्टीरिया में। सो
it was proved that DNA was a transforming agent. जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल था, ये क्या प्रूव हुआ? DNA. Okay. Now, when the DNA fraction was treated with deoxyribonuclease, which is an enzyme that digests the DNA, it became inactive and incapable of transforming the rough strain into the smooth strain. क्या बोल रहे हैं? लाइव आर बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम था, उसमें डीएनए किसका डाला? ऑफ द एस बैक्टीरिया. अलॉन्ग विद द डीएनए दे ऑल्सो एडेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम. ये वो एंजाइम है जो डीएनए को क्या करती है? डाइजेस्ट. सो इसमें क्या कंक्लूशन आया कि ये एंजाइम की वजह से एस वाले बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया, वो डाइजेस्ट हो गया. एंड उसकी वजह से आर बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट नहीं हुए? बाय दे डिडंट गॉट कन्वर्टेड इनटू एस बैक्टीरिया. सो इससे ये कन्फर्मेशन तो आ गया कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है. एंड डीएनए हीट से डिस्ट्रॉय नहीं होता. अगर हीट से डिस्ट्रॉय होता तो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया कभी भी आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, उसका डीएनए कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते. बट इट इज़ ओनली डिस्ट्रॉयड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम deoxyribonuclease. It is not destroyed if the cells are killed with the heat. Okay. They also discovered that protein digesting enzyme proteases and RNA digesting enzyme, that is RNases, did not affect the transformation. So the transforming substance was not a protein or RNA. उन्होंने क्या किया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटियोसिस एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम बोलते हैं आरएनएसेस, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करते थे. यानी प्रोटिएसिस डाला, आरएनएसेस डाला तो डीएनए तो कैसा रहा? एज इट इज रहा. एंड दूसरा कि ये दोनों की वजह से ट्रांसफॉर्म प्रोटीन या डीएनए से प्रोटीन या आरएनए से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, ये कंक्लूजन हुआ. डाइजेशन विद द डीएनए डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन. क्या कंक्लूजन हुआ कि अगर डीएनए एंजाइम डाली गई थी, ये टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, सजेस्टिंग दैट डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोटिएसेस डाला, आरएनएसेस डाला एंड जब डीएनएसेस डाला, प्रोटिएसेस डाला तब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आरएनएसेस हुआ तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. क्यों? क्योंकि ये टाइम पे डीएनए चेंज नहीं हुआ. बट जब डीएनए एंजाइम डाली तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. ओके, सो दिस कंक्लूडेड दैट डीएनए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. So they concluded that DNA is a hereditary material, but all the biologists were not convinced. So इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि DNA ही हेरिडिटरी मटेरियल है, बट वो टाइम पे सब बायोलॉजिस्ट ये बात मानने को तैयार नहीं थे. सो कंक्लूसिव एक्सपेरिमेंट्स वर गिवन बाय हर्शी एंड चेस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. सो वो क्या ही वो हम बाद में देखते हैं. So now transformation. So what is transformation? It is a permanent inheritable change produced in one strain of bacteria by a substance isolated from a other change. A substance which brings about transformation is called transforming agent. For example, in our case it is the. Now students, we will see the results of the AVERY'S experiment. So students, we know that what did he do? He took the bacteria of the R type and in that he injected the carbohydrates of S type. The result was R type bacteria. When R type live bacteria were injected with the proteins of the S type bacteria, again R type bacteria were obtained. When R type bacteria were injected with the DNA of the S type bacteria, we obtained the S type bacteria. यानी क्या हुआ कि DNA of the S bacteria transformed the live R bacteria into the S type bacteria. लेकिन जब R type bacteria, DNA of the S type bacteria and along with that deoxyribonuclease enzyme
जब हुआ तो क्या हुआ, ये एंजाइम ने ये डीएनए को क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया, यानी डीएनए ऑफ द एस बैक्टीरिया गॉट इनएक्टिवेटेड एंड व्हाट वाज ऑब्टेन, द आर बैक्टीरिया वाज ऑब्टेन. So from that it was proved that DNA is a genetic material. It is a transforming agent which is transforming the live R bacteria into the S bacteria. See students, now again ये experiments का diagrammatic view है कि either genetic material is either protein or nucleic acid, that is it may be RNA or DNA. So कैसे prove किया, so they took the extract of the heat killed S bacteria, उसमें से उन्होंने लिपिड्स एंड शुगर्स को रिमूव कर दिया. सो दे रिमूव द लिपिड्स एंड शुगर्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द हीट किल्ड बैक्टीरिया. अभी सिर्फ क्या बचा होगा, वो मिक्सचर में प्रोटीन्स, आरएनए एंड डीएनए. ओके, अभी ये वाले मिक्सचर ने उन्होंने क्या कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक पार्ट में प्रोटीनेज एंजाइम डाली, which mixture of heat killed S bacteria which contains only proteins, RNA and DNA. ओके, अभी एक मिक्सचर में उन्होंने क्या डाला, प्रोटीनेज एंजाइम डाली, एक पार्ट में उन्होंने आरएनएज एंजाइम डाला और एक पार्ट में डीएनएज एंजाइम डाला. ओके, अभी जो सॉल्यूशन में प्रोटीनेज एंजाइम डाली है हीट किल्ड एक्स बैक्टीरिया के वो सॉल्यूशन में जिसमें प्रोटीनेज एंजाइम डाला है, वो उसमें प्रोटीन्स नहीं रहेगा. क्यों, क्योंकि प्रोटीनेज एंजाइम ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया है. सिमिलरली वो मिक्सचर में जहाँ पे आरएनएज एंजाइम रहेगा उसमें आरएनए नहीं रहेगा. एंड सेम वे जो मिक्सचर में डीएनएज एंजाइम डाली है उसमें डीएनए नहीं रहेगा. ओके, अभी ये वाले मिक्सचर में कि जिसमें प्रोटीन नहीं है उसमें लाइव आर बैक्टीरिया डाले और जब उसको ऑब्जर्व किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कौन से सेल्स दिखाई दिए, एस सेल दिखाई दिए. क्यों, क्योंकि डीएनए एस सेल का कैसा था, इंटैक्ट था. नाउ सिमिलरली दे एडेड द मिक्सचर ऑफ द हीट किल्ड एस बैक्टीरिया जिसमें आरएनए नहीं था एंड फिर उसमें क्या ऐड किया, सो दे एडेड दैट मिक्सचर टू अ कल्चर कंटेनिंग द आर सेल एंड व्हाट डिड दे ऑब्टेन, दे ऑब्टेन द एस सेल. लेकिन वो एस सेल का मिक्सचर के जहाँ पे डीएनए नहीं थे और उसको जब आर सेल वाले कल्चर मीडियम में डाला गया तो यहाँ पे आर सेल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. क्यों, क्योंकि डीएनए ही नहीं था, डीएनए नहीं था तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ. इसमें से ये कंक्लूजन हुआ दैट ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स द डीएनए एंड देयरफॉर डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल. नाउ स्टूडेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटीरियल है. But at that time, biologists were not ready to believe that DNA is a genetic material. So there came the conclusive experiments to prove that it is only the DNA which act as the genetic material. ये conclusive experiments it was given by Hershey and Chase, जो हम next video में study करेंगे. Today we end our lecture here. आज हमने क्या study किया? So today we have studied regarding the packaging of the DNA. We have studied Griffith experiment, or you can say transforming principle, and we have also studied the biocharacterization or biochemical characterization of transforming principle. In the next lecture, we will be studying regarding the conclusive experiments which prove that yes, it is only the DNA which will be acting as the genetic material. Thank you, students.